लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान नंबर वन फुटबॉल पॉडकास्ट। मेरा नाम इस्माइल फ़ारूक है और ये पार्ट टू है और फिर टू पार्ट एपिसोड जिसके अंदर हम सैफ चैम्पियनशिप को रिव्यू कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम के कॉन्टेक्स्ट में। और हम पाकिस्तान फ़ुटबॉल और उसकी टीम के बारे में कुछ मेन जो सवालात हैं या कुछ मेन जो चीज़ें हैं जिनको क्लैरिफाई करना है उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लाइक द प्रीवियस पार्ट, इसमें भी मेरे गेस्ट जो हैं वो शेख हमदान और करीम कराए हैं, दो प्रोफेशनल कोचेस। और या इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट पार्ट वन, प्लीज़ डू चेक इट आउट। द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज वेल, और आप वैसे भी हमारे चैनल पे उसे ढूंढ सकते हैं। एंड या एंजॉय पार्ट टू। जस्ट इसी पे कंटिन्यू करता हूँ। ही के थिंग्स के ब्राइट नहीं है। ऑनलाइन भी जो है शहजाद अनवर और कोचिंग स्टाफ पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, एज यू प्रोबेबली सीन। कुछ लोग कह रहे हैं जी फॉरेन कोच ले आओ और ये कर लो और वो कर लो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, अबाउट द कोचिंग स्टाफ ब्रिंगिंग इन अ फॉरेन कोच? क्या हमारी सीलिंग हो सकती है इन प्लेयर्स के साथ जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं? आई थिंक सबसे पहले तो we're understaffed. Let's all agree over that as well. अंडरस्टाफ्ड है। एक गोलकीपर कोच को उसी वक्त बुलाते हैं जब हमारा नेक्स्ट नेशनल कैंप अनाउंस होता है या जो भी तो है। और एक शहजाद अनवर ही ईयर राउंड फुल टाइम गाय है फॉर द फर्स्ट टीम। दिस इज अ जोक, दिस इज अबिस्मल, ऑनेस्टली। मजाक है ये कि एक बंदा पहले से बैठा हुआ है। फिर दूसरा सवाल आप ये कह रहे हो क्या वो बंदा सही है? यार, फिर हम कैसे जज करें वो बंदा सही है अगर हमने उसको सारे राइट टूल्स नहीं दिए, उसको हमने राइट एनवायरनमेंट नहीं दिया, उसकी हेल्प नहीं की। उसके बाद हम प्रॉपरली उस चीज को जज कर सकते हैं कि यार क्या वो सही। अभी आप ले आओ नेक्स्ट बंदा, लेट्स से मैं ले आता हूँ जो भी नेक्स्ट कोच मेरे पास फॉरेन कोच अवेलेबल है, मैं वाडियोला बोलूँ यार वाडियोला ब्रिंग हिम इन यार, ब्रिंग हिम फॉर द लव ऑफ गॉड एंड से यार यूर वन गाय, सॉर्ट योर मेस आउट योरसेल्फ। आई मीन पूरे जो हमने वो 75 साल का मलबा है वो एक बंदे पे फेंक दो। सर मैं बताऊं इस्माइल, आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स समटाइम्स वोंट इवन टेक सच अ जॉब। यस क्योंकि जो यार। हमदान का पॉइंट है, आपके पास कितना टाइम है विद द प्लेयर्स, आपके पास कितना स्टाफ है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। आई डोंट नो द आंसर्स, लेकिन मेरा नहीं है रिसोर्स, नो नो, they लिमिटेड, don't बहुत have the लिमिटेड है, resource यार। बहुत लिमिटेड है। He's the one guy who's full time Pakistan MNT coach यार, one guy। व्हाट अबाउट टॉर्बिन How जो do you? अभी असिस्टेंट को, वो इजी फुल टाइम? He's a project, no, he's a project man, he's on this project प्रोजेक्ट पे only। तो नहीं नेशनल टीम चल सकती ना। तो फिर एक्सपेक्टेशन ना आप कोच से एक्सपेक्ट करो, ना फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है फिर तो बस ना, मैं तो। बहुत मुश्किल अच्छा अच्छा, जॉब है, फिर बहुत ही टफ जॉब अग्रीड है अग्रीड। ये। या सॉरी, ये कि आई जस्ट वांट टू, हमदान ने लास्ट बात की थी कि फिर आप कुछ ना एक्सपेक्ट करो, क्योंकि मतलब कोच को, या, मतलब कुछ एक्सपेक्ट, अगर हम अगर यार अगर मुझे एक सवाल, हाँ। अगर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्रॉपरली, क्योंकि प्लेयर्स, देखो प्लेयर्स, मैं इस तरह कॉन्टेक्स्ट करना चाहता हूँ कि अब जो हम प्लेयर क्वालिटी की बात करते हैं ना, आई आई मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, लोकल प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। एंड आई थिंक वी ऑल अग्री, लोकल प्लेयर्स को कोई गलती नहीं है, ना ही कोई बोल रहा है कोई गलती है, क्योंकि आई थिंक द सिस्टम हैज लेट देम डाउन, पाकिस्तानी फुटबॉल हैज लेट देम डाउन, और वो सारा किसी इंडिविजुअल उनका अपना कसूर नहीं है। बट अगर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेस्ड ऑन हमारे पास जो भी स्क्वाड है, या फिर अगर हम कोचिंग स्टाफ से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडर स्टाफ है, कि के टू योर पॉइंट, हाउ डू वी जज आवर प्रोग्रेस? बिकॉज यू सेड कि अगर लोगों को प्रोग्रेस नजर आती है तो वो कहते हैं यार चलो ठीक है। प्रीमियर लीग वगैरह में तो आप कह सकते हो यार चलो, लिवरपूल ने जो है यर्गन क्लॉप में पहले मे बी। इधर फिनिश किया फिर इधर फिनिश किया, अब इसमें हम मैं किस तरह कर जज सकते हैं? I would judge progress simply right now, simply on continuity of the processes. Continuity of the processes. Let's look at what's happening in, forget England, forget Argentina. Let's look at the countries around us. Let's look at India. Let's look at Kuwait. Let's look at these countries and let's look at their staff. Let's look at their resources. Let's look at how many matches they play every year. Let's look at how many training sessions they have over here. Let's see if they have a gym facility. Let's see if they have a nutritionist. Let's see if they have a video analyst. Get those things in place, यार। अल्लाह माफी, तुम ये अपना जिम भी जो है वो पीएफएफ हाउस के बाहर वो लॉन में कर रहे होते थे, मतलब तुम हमारे पास जिम अपना भी नहीं है प्रॉपर। तुम अपने तो अपने रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, प्रोसेसेस ठीक करो। Forget about the scoreline, यार, in these matches. We are 30 years away. We need to build the बट के यू सेड रिजल्ट infrastructure. चाहिए सबको।
result Brilliant. तो obviously चाहिए Brilliant. मतलब यही ना भाई, अब क्या, यही तो पूरा सवाल है। सवाल मैं यही तो बोल रहा यार हूँ, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बंदा सुन रहा है ना, वो नहीं कंफ्यूज लेकिन होगा, देखो यार मैं बोलेगा पॉइंट देखो मेरा यार ये एक था बात इस्माइल, रिजल्ट चाहिए बट द बैक एंड ऑफ द रिजल्ट इज ऑल द प्रोसेसिंग व्हिच वाज माय पॉइंट, वी बट वांट यू आर द सेइंग रिजल्ट इफ बट वी इट्स प्लान अबाउट एंड प्रिपेयर वी कैन, बट एट द सेम टाइम वो 30 साल का एक बर्डन चल रहा है हमारे ऊपर। यही तो मैं समझने की कोशिश करूँ कि द इसको किस तरह प्लानिंग एंड रिकंसाइल करें। प्रेपरेशन रिक्वायर्स दीज रिसोर्सेज, आर दे देयर? वो हैं शहजाद अनवर के पास, हैं प्लेयर्स के पास, हैं, डू दे हैव दोस रिसोर्सेज विद देम? मुझे बता नहीं है। दे भाई, तो मुझे फिर वी नहीं पता, कांट आई कैन एक्सपेक्ट ओनली एनीथिंग राइट। तो फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में यू आर, मतलब फिर ये नहीं हम कह सकते ना कि वर्ल्ड कप, लाइक आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर बिकॉज मैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अगर हमारे पास नहीं अनलेस के कोई गाइस भाई नहीं, सिंपल नो, कुछ भी नहीं हो क्योंकि भाई सकता, तुम जस्ट ज, लुक एट इट ज, लॉजिकली। हाँ इमेजिन ना, हमदान गेट्स अप टुमारो एंड वांट्स टू रन अ मैराथन, ठीक है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। He can't do it. This is what we are expecting. Pakistan team gets up यार and does a अभी marathon. अभी आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। अभी जो करंटली बात हो रही है ना वो ये हो रही है कि यार there's a war out there, right? You need an army, ठीक है? The war is in Russia। हम बोल रहे हैं यार एक बंदा है, वो जाएगा अपना सारा सामान वामान लेके पैदल रशिया पहुंचेगा, अकेले लड़ेगा। क्या एक्सपेक्टेशन है? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनीथिंग यार? ही डजंट हैव द आर्मरी, ही डजंट हैव द सपोर्ट, ही डजंट हैव द लेग्स। सो देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स ना कि यार वो सोल्जर काबिल है भी कि नहीं। अबे सोल्जर को देखो छोड़ दे, इसलिए पीछे अच्छा नहीं अवाम नहीं, ही एक खड़े हैं। इस्माइल, सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हम बिकॉज वो ना, हम फिर वो मैं सवाल भूल जाता हूँ हमदान। यू इसी एग्जाम्पल पे एक सोल्जर है, वो जा रहा है, उसने सब कुछ करना है, लेट सपोज वो सोल्जर से ज्यादा अनवर है, लेट सपोज, क्योंकि सवाल मैं पूछना वो चाहता हूँ। है सोल्जर, ही हाँ इज ठीक है, सोल्जर। लेकिन लेकिन हमदान फिर उस सोल्जर को जज किस तरह करें और कब करें? अगर कभी उस बेचारे सोल्जर के पास आर्मी नहीं है लड़ने यार के लिए, उसको हाउ डू वी जज एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन डू वी जज? अनफॉर्चुनेटली उसको जज मैं अगर होऊंगा और मैं फुटबॉल आई से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार अब सम रियली समथिंग, ठीक है टूर्नामेंट में आ गए, हाउ आर हिज सब्स्टिट्यूशंस विद इन गेम सब्स्टिट्यूशंस क्या है? इज ही रीडिंग सिनेरियोज, इज ही रीडिंग मोमेंटम्स विद इन द गेम? कैन ही मेक सब्स्टिट्यूशंस एट द राइट टाइम? डज ही नो बट हिज प्लेयर्स? इस्माइल, it depends who is judging him. वही If इसलिए मैंने it's, कहा कि मैं फ्रॉम अ कोचिंग। yeah, हाउ if वुड it's यू the जज? P, हाउ वुड if यू it's जज? the, it depends what hat I'm wearing. If I'm the PFF head, then I'm judging from a different angle. If I'm a fan sitting at home, a fan, a supporter, unfortunately, the way the world works, it's a results business, is how we started. We तो will be फिर तो हम looking at कोचेस the, चेंज करते रहेंगे। अगर हम नया कोच ले आए, उसके पास भी स्टाफ नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं है, लीग और हम बाकी सब कुछ नहीं करे, वो तो फिर हम एक कांस्टेंट चर्न रेट चल रहा होगा हमारा। तो वो यही तो चलता रहा है पहले भी। तो मोहम्मद and शमरान। जो मसला है कि हम फ्रंट मैन को कटा देते हैं, whereas we're not realizing कि we have to get the ship and the machine and the बैग या back end. पायलट बाद में आएगा। अरे जहाज, हाँ एंड अच्छा, में आएगा। जहाज पायलट, के विंग्स हैं, अभी सिर्फ विंग है, पर पे कह रहे हैं यार विंग लटक भी के नहीं है, जहाज विंग चला भी दो। नहीं है, वो उसको स्टीयरिंग पकड़ा दिया, जहाज ही नहीं है पीछे और कह रहे हैं चलाओ। तो Yeah, I लाइक आई feel the थिंक अब best इस पे आना target होगा is यार। to continue. Ismail, sorry to cut you off. Continue while fixing and improving the back end. ओके, Keep या improving the back end. या बैक एंड पे मैं आता हूँ। जस्ट बिफोर वन क्वेश्चन कि अब आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू गाइस लाइक कोट अनकोट शाइन तो नहीं मैं कहूंगा, बट यू कैन एक्चुअली लाइक गिव योर ओन थॉट्स, बिकॉज पहले तो अभी हम So लिटरली far, we इन have द not been shining. इन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उधर क्या होता है। बट फर्स्ट टू हमदान एंड देन टू करीम, what would you do in the short term based on the इंटरव्यू, players that we जॉब have? इंटरव्यू। हाँ मैं ही तो दूंगा जॉब। तो based on the current players that we have that you've seen SAF championship में, what would you do in the short term to get have the best possible chance of winning whatever or ग्रेट, getting a परफेक्ट। result? I will analyze each and every game of all the games that saw. I will analyze each and every player individually to find out what he's done in those games, what are his best possible qualities, ठीक है? uh, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज जॉब मिली है। So for example, there's a player named सरदार वली who's been with the camp since day one. I haven't seen him play, तो मैं नहीं उसकी बात कर सकता, मैं limitations पे आ रहा हूँ। Then I would, as soon as the World Cup draw gets announced, I think announce हो जाता है 2 महीने 3 महीने पहले, I will analyze each and every one of the game last 7-8 games जो उन्होंने खेले,
एनालाइज देयर स्क्वाड, देयर सिनेरियोज, क्योंकि सैफ में काफी सारे सिनेरियोज हमारे और उनके सिमिलर हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर 6 गेम एनालाइज कर लूं, पता चला एक गेम पहले उन्होंने एक नया मैनेजर लिया है, तो वो सब बेकार हो जाएगा, राइट। वो करूंगा। नंबर 3 मैं चेक करूंगा अपने स्क्वाड के अंदर हु आर माय बेस्ट सेट पीस टेकर्स एंड व्हाट, नंबर 3। एंड नंबर 4 would be to sort out the out of possession as quickly as possible. Would hold a lot of Zoom meetings, because I'm assuming the diaspora players are not available. Zoom meetings on showing how, when, where can we improve the defense, when do we get compact, कब कैसे, and उन्हीं meetings में clearly outline everything the next time they reach the camp, कि this is how we're gonna play through simulations and all of these things. This is what I would do. Okay, Over to you, क्या क्या? before moving on to Kareem, I would also like to add the second part of this question, इसी question में, कि what kind of ठीक है। play style do you realistically think that हाँ। you would play based on like what we could play with these तो players? one World Cup qualifier, like the No, next just game, are you generally talking moving about? forward, like क्या playing style हो सकता है generally? Yeah, I would certainly look to improve the players' overall fitness. जो local वाले player हैं, diaspora तो I know because they play a season, and then I would look to play a brand of football. देखो वही वाली बात है, मैच टू मैच स्ट्रेटजी चेंज होती है, बट मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी पॉसिबली एक चीज पे सेम रहती है, कि वी वुड want to possibly press high as much as possible and look to create turnovers in their half, क्योंकि वहां से गोल का रास्ता करीब है। The more I force them into errors, the more there are possibilities कि वो गलतियां करें और प्रेशर बिल्ड हो और हम वहां से करें। That this is what I Okay, KK, over to you. I think very similar to what Hamdan said, not many differences on that side. I think there are a lot of analysis that would go into it, and I think it's very underrated, the aspect of analysis, understanding why as a team we also conceded the goals we conceded, why as a team we weren't able to create the chances we were unable to create, and I would identify the priority areas that we need to iron out. Listen, let's be honest, सारे negatives नहीं थे, there were some strengths as well, right? And that should not be ignored. But the areas that the team needs to work on in all four phases of play, in possession, out of possession, the two transitions, and of course the set pieces. Can I analyze, can I outline, and can I get to work as fast as possible, whether it be through video? Best is obviously on the pitch, but if it's not possible on the pitch, then can I get as much information in a concise and clear way to all the players on what we expect from them? Because clarity is so important from the coach कि हम क्या चाहते हैं from the player. ये the first step है. Then, as Hamdan said, if we know who we are playing against, deeply analyze every opposition, right? Figure out a match plan with my staff. Hopefully, I have a staff. If anything, I'll probably call the two of you and discuss with you. Yeah, how do we, how do मुफ्त में कर we, लेंगे हम तेरे लिए। हाँ, how do we hurt this team we're playing against? Okay, guys, बात ये है short term है. We have to get a result. It's the World Cup qualifier. Good long game हम नहीं खेल रहे. We are trying to win that next game and get a result. So creating a strategy, creating a plan for that game, getting that information to the players on pitch sessions, on video sessions, and uh, uh, that's my way of preparing a team. That's how yeah, I know. yeah. That's how I would go about it. And psychologically, obviously, there's an element of that as well, and that's a different whole discussion altogether. Yeah, I agree. And also just for people who are watching या listening, के आउट ऑफ पोजीशन को ठीक करना सबसे आसान होता है। हमने पहले भी बात की हुई है, रिलेटिवली सबसे आसान होता है, क्योंकि इन पोजीशन को बहुत टाइम लगता है। और दैट्स व्हाई आई थिंक आई वुड आल्सो अग्री विद बोथ ऑफ योर पॉइंट्स कि आउट ऑफ पोजीशन फिक्स करो, क्योंकि गोल आप, एक तो दो वही चीज़ें हैं ना कि आपने कोशिश करनी है। अगर मैं इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करूँ, आपने ये जो जिस तरह की, फॉर एग्जांपल, जस्ट वन सेकंड करीम, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टूर्नामेंट फुटबॉल या इस तरह के वन ऑफ गेम्स में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने गेम स्टेट को जो है वो अपने फेवर में करना है और अपने अपने अगेंस्ट नहीं जाने देना, ठीक है। तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो गोल कंसीड ना करो, और एक है कि
गोल कहीं से किसी तरह कर लो, दैट्स द दोज आर द टू थिंग्स राइट। एंड उसके अंदर व्हाट यू डू इज के एक तो आप डिफेंसिवली सॉलिड हो जाओ सो यू डोंट कंसीड चीप गोल्स। हमने सैफ चैंपियनशिप में ऑलमोस्ट हर गेम में जल्दी गोल खाया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये है, यू थिंक ऑफ वेज, वही जिस तरह करीम यू ऑल्सो मेंशन्ड एंड हमदान के, यू थिंक ऑफ वेज कि भाई हम उनके नेट में बॉल किस तरह पहुंचा सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वेज। और उसके अंदर द बेस्ट पॉसिबल इजीली लाइक इजी वेज या क्विक वेज टू गो अबाउट इट इज कि आप पॉसिबली हाई प्रेस करके ट्रांजिशन में करने की कोशिश करो, क्योंकि नियर देयर गोल वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है ऑपोजिशन, दैट इज इजियर टू क्रिएट अ चांस दैट वे। मोस्ट गोल्स हैपन इन फुटबॉल विद इन 7 or 8 seconds ऑफ अ ट्रांजिशन एनीवे। उसके बाद दूसरी चीज है सेट पीसेस, और इस तरह आप कर सकते हो। सो या यू वर गोना से, आई थॉट आई वुड जस्ट Yeah, I just रैप इट want अप। to say for those who are still listening that, I think both Hamdan and I and Ismail have been very careful of being too critical of Shahzad Anwar. As we've spoken about the resources, we've spoken about a lot of things. And another thing I'd like to also mention is that in the Kuwait match, in the second half, I saw a change of strategy from the team. They changed their defensive shape. They were preventing penetration centrally. They didn't want them to allow them to go down the outside, right? And credit to Kuwait, they were still able to penetrate. They were still able to create chances. My point is that it wasn't all passive ke baithe हुए हैं और बस यार खेलो. There was an effort, at least in that game. So I'd like to point out of a change of strategy. The second thing I'd like to say is that a lot of goals were conceded on transition, losing the ball and then getting counter-attacked, and very silly या mistakes of losing कॉर्नर्स possession पे in, लूज कर दी बॉल और एकदम yes, से निकल गए वो। in poor areas, losing the ball and not able to recover the ball. Again, something difficult for a coach sitting there to avoid because you lost it in a area and you're counter-attacked. Third thing against India, I know we lost 4-0, but we also have to see that the penalties, there were two penalties, I believe, that were given against us. I'm not trying to say that we've jeet jate ya hum या draw ho jata, लेकिन every game is different. Analysis is important, understanding कि कैसे हमने concede किए हैं. Or lastly, I must say that the goalkeepers have not helped him or the national team in this tournament. I know Saqib Hanif was then dropped. Yusuf Butt came in, and let's be honest, he didn't cover himself in glory as well, getting beaten on the near post many times. And I saw the defenders also getting frustrated with him कि भाई near post पे you like your goalkeeper to make those saves and keep the ball out of the net. So um, I just want to mention that okay, we have to also look at the details and how we conceded, where we conceded, and या this is या also important या to point मूविंग out. मूविंग ऑन, आई थिंक अब जो अभी पहले बात की थी कि जहाज हमने वो शिप बनानी है, ठीक है। पहला तो सवाल ये है कि शिप, एक तो शॉर्ट टर्म की हमने बात कर ली, फिर मीडियम टर्म है। मीडियम टर्म है, आज हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें 3 से 5 साल में जो है उसका फायदा हो, या कुछ हम विद इन द 3-5 years वी कैन इम्प्रूव समथिंग। वो मैं सवाल आई वॉन्ट टू पुट इट टू बोथ ऑफ यू कि हमें क्या करना चाहिए इन द मीडियम टर्म या क्या कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि अगेन ये इंटरनेट और हर जगह ये बात चल रही है कि अब ऑब्वियसली हम भी वो लोग हैं जो कहते हैं यार जो बेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए या जो खेल सकते हैं उनको लेके आओ, ठीक है। उसके अंदर डायस्पोरा प्लेयर्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू वी आई स्पीक फॉर ऑल थ्री ऑफ अस जब हम कहते हैं कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोकल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। तुम अभी 11 के 11 डायस्पोरा ले आओ, लेकिन अगर तुमने लोकल डेवलपमेंट ना की, तुमने अपनी अपनी जो कश्ती है वो ना बनाई, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते ओवर द लॉन्ग टर्म, कुछ भी नहीं कर सकते। So I think I was just wanted to add that caveat. Or before, like I think Hamdan, you can start and then I'll move forward to Kareem. कि मीडियम टर्म में आई क्या थिंक करना चाहिए। नेशनल, ओके, मैं अगर पीएसएफ का हेड होता, मैं मीडियम टर्म में एक चीज ये करता कि मैं अपने मुल्क के अंदर हर शहर में, हर मेजर शहर के अंदर, अगेन यार इसके अंदर बहुत सारे इफ्स हैं और बहुत सारे रियलिज्म्स इन्वॉल्व हैं, बजट्स इन्वॉल्व हैं। आई डू नॉट नो क्या बजट्स हैं, बट लेट्स से कि मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बजट मौजूद है। सही है, मैं करता ये कि जितने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहर मेजर 5-6, उनके अंदर में डेवलपमेंट सेंटर खोलता फॉर बेस्ट अंडर 16 प्लेयर्स करंटली इन द कंट्री, ठीक है, इन द सिटी। लेट्स से मैं हर सेंटर के अंदर एक कैप रखता 100 बच्चों का, और हर एज ग्रुप को मैं 25 में रखता, 4 एज ग्रुप्स। और मैं उनको करता कि यार वीक में 4 दिन हम किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं
सो दैट 5 साल बाद, और मैं फिर जाहिर है अब आप बात आ जाएगी कोच कौन करेगा, वल्ला आलम कौन कोच करेगा। मैं गिन के 5-6 लोगों के नाम ले सकता हूँ। 5-6 लोग तो सिर्फ, एटलीस्ट 2 लोग तो एक ही एज ग्रुप के लिए चाहिए। बट लेट्स से आई हैव द रिसोर्सेज, दिस इज व्हाट आई वुड डू, एंड आई वुड वर्क टुवर्ड्स अ 5 ईयर प्लान। उससे मैं अपने बेस्ट अंडर 16 की टीम बनाता, राइट। आई वुड ट्राई टू गिव देम एज मच एक्सपोजर पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, राइट। आई डोंट नो क्लब स्ट्रक्चर, लीग स्ट्रक्चर कितने जल्दी हम सुधार सकते हैं, बट we can work on these guys, giving them opportunities to play, have some associations with these national bodies, Qatar and all. क्या हम Aspire के पास क्या, can we send 5 of our players to for some exposure and all of these things, work towards them यार। 5 साल में वो 21 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, some of them might be really ready to step in and do या something in the फिर next इधर वे 5 years, विल बी रेडी फॉर एन अंडर 21 चैंपियनशिप या अंडर 23, मतलब something of आप the और फिर sort. उधर से उनको एक्सपोजर मिले, फिर This वो और is ऊपर जाए या this is medium term में मैं from a development point of view मैं ये करता, medium term from my national team point of view मैं बनाता बेस्ट पॉसिबल लिस्ट ऑफ हायरार्की। ठीक है, हायरार्की से मुराद ये एक फ्लो चार्ट बनाता कि यार आइडियल केस के अंदर मेरी टीम के अंदर कौन कौन से वर्किंग स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, क्या वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए, राइट। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा यार एक मैनेजर होगा, 3 असिस्टेंट कोचेस होंगे, एक गोलकीपर कोच, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, ये एनालिस्ट, इतने एनालिस्ट और इतने अप टू बॉटम कितना कौन कहाँ कहाँ पहुंचता। और मैं बोलता 5 साल में मेरा एम ये है कि नेशनल टीम में आफ्टर 5 years आई हैव प्लग्ड ऑल दीज होल्स इन। ठीक है, और मेरे पास एक जहाज मौजूद है, वो जहाज चाहे बेशक डिफेंस से गुलशन जा सकता है, बट वो जहाज मौजूद होगा कि वो आपको लेके वहां तक जा सकता है। मैं ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स रखता। ये मैं एमएनटी की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स टीम इज होल डिफरेंट बॉल गेम, और मोर और लेस सिमिलरली मैं वहां पे भी इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करता। बट आई एम नॉट कमेंटिंग बिकॉज आई एम नॉट वेल known about the women's game. So this uh, was what. yeah, yeah, के आई थिंक आई वुड एग्री ऑन व्हाट ही सेइंग, बट लीग के ऊपर मैंने ये बात करनी थी, एंड ऑल्सो यू कैन गिव मी योर जनरल पॉइंट्स एज वेल। कि लीग पे आई थिंक इज वन थिंग जिस पे अभी भी काम शुरू हो सकता है। उसके लिए आपको कोई लंबा वो नहीं चाहिए, आप लीग कराना शुरू करो, और वही वाला मेरे ख्याल से सीन होता है कि आप एक दफ़ा शुरू करो और उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइज और आइटरेशंस में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, नीचे डिविजन्स ला सकते हो, और क्लब्स को इंक्लूड कर सकते हो, वो सब कुछ। बट आई थिंक लीग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक तो हमारी नेशनल टीम भी मैचेस नहीं खेलती, राइट। एंड एक तो हमारी नेशनल टीम भी मैचेस नहीं खेलती, और दूसरा ये है कि हमारे जो है वो लोकल प्लेयर्स भी आपस में मतलब मैचेस नहीं खेल रहे कंपटीशन में, तो मतलब वही बात है कि कुछ है ही नहीं पीछे। बिल्कुल, I completely agree, Ismail. Competition structure is very, very important. The league is very important. And then it can work downwards. So आपके पास सीनियर लीग है, फिर आपका अंडर 23s भी हो सकता है, आपका अंडर 21 भी हो सकता है। आपका obviously in an ideal world, you want to keep moving down that pyramid and making sure there's competition and leagues for all ages. Um, so agree with all the points, guys. I think this is not rocket science, but it's difficult to manage it well, to organize it, to have the resources to implement it, and inshallah, we get to that stage at some point in our lifetime. Yeah, I just want to quickly wrap it up, like before we go. सवाल तो काफी ब्रॉड है, बट लाइक जस्ट क्विक पॉइंटर्स के लॉन्ग टर्म में, जस्ट टू पीपल को, लोगों को पता चल जाए कि भाई हम कितना दूर हैं और हमारा कोई वो ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं दैट यू वुड डू, एंड जस्ट टू बिफोर आई गिव इट टू यू के आई जस्ट वांट टू से कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम आज भी, मैं सबको जो सुन रहे हैं, जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं, अगर आज भी हम अपना किबला दुरुस्त करते हैं ना आज, जो कि नहीं होने वाला क्योंकि वो पता नहीं कब होगा, बट अगर आज भी करते हैं तो भूल जाओ वर्ल्ड कप, भूल जाओ कुछ जीतना अंटिल द नेक्स्ट एटलीस्ट 25-30 ईयर्स, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं होने वाला, राइट। एनीवे, ओवर टू So यू। people ask this question as well, how far are we from qualifying from the World Cup or from getting to the world stage in football? मेरा जवाब हर वक्त यही होता है कि it's like saying how long will it take you to swim one length? But the problem is you haven't actually gone into the pool as yet. So we haven't actually started the process yet. We haven't jumped into the water as yet. And I think where it's a large
broad answer, but I'll just sum it up with 2 or 3 key points. I think grassroots development is absolutely critical. And that does not mean just having a very recreational program. Yeah, that's also beneficial to generate interest in the sport, but these grassroots development centers or talent development centers have to be treated like professional clubs, like professional academies, where all the things Hamdan said the men's national team has. We should have that sort of resources at the grassroots level, because those are the players that you're going to develop who are going to play in your national team. So it's not just tick box ke हाँ बच्चे खेल रहे हैं, नहीं बच्चे खेल रहे हैं, but what are they doing? How are they being coached? That's a whole different discussion we can talk about some other time. The second thing is coaching development. I think is obviously important to keep giving exposure to coaches, helping them expand their knowledge. Very, very important. I really feel sorry for a lot of coaches in Pakistan because it's not their fault. It's the federation's fault. They haven't had any platforms or opportunities to get their licenses, to get their education, to have that exposure. And it is the role of the federation really to give them that platform. आज Zoom का जमाना है, video का जमाना है. Can we get information to them on Zoom? Can we get it in video form? If they can't fly them anywhere, something. Grassroots development, coaching development, and I would say, just because we are up short on time, I would say competition structure is critical, not just at the top end for senior players, all the way through, starting from your under sixes, to your under eights, to your under tens, all the way up to the top. Why is that important? Because if there was no La Liga, if there was no Premier League, I have a very strong feeling we would not have the Messis of the world, we would not have the Ronaldos of the world, because that is a big driving force for any athlete to have that pinnacle of a league, of a trophy, of a competition, of a stadium to play in. It drives motivation, it drives inspiration. Yeah. So that's Yeah. I'm done quickly. Over to you. Copy and paste. I would also like to just go through the points. I would also copy and paste. I would just say to add one more मतलब thing. इसको summarize कर लो. You need an ecosystem यार. Yeah, exactly. वही मैं कहने ये लगा था. You need an ये सारी ecosystem. चीजें ecosystem में मौजूद हैं. मतलब league, competition, grassroots, coaches, infrastructure, everything. This is all a part of your ecosystem. Yeah, absolutely. कोई I think shortcut नहीं है, यही है. और उसके unfortunately, अंदर there's no shortcut. और नेशनल टीम लेवल्स भी इसके साथ आपको बनाने हैं. वही अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 के डिफरेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स. जापान ने आज से 30 साल पहले बोला था. जापान में there's a guy named Tom Boyer, I don't know how you pronounce it, but he said it'll take Japan 30 years to start producing elite quality players. There's an article back then he said it. You're seeing elite level players right now. Karo Mitoma, Takefusu Kobu. Then there is another player who plays in Rangers. I think Napoli वाला भी वो South Korea है. South Korea है. वो Kim Min-jae. They've got elite level players right now. ठीक है, elite level, young players, not Suzuki Honda जो one off निकले थे. नाकामूरा और वो थे, but elite level players. They've done it 30 years. और उन 30 years से पहले उनका और आपका हाल सिमिलर था बाय द वे. वो जब उनकी भी लीग डिपार्टमेंटल लीग थी, उनकी भी वहां पर भी यही लड़ाइयाँ होती थी. इसी तरह के सिस्टम थे. सैमसंग की टीम है और सुई गैस की यहाँ की टीम है. वो गैस नहीं बना रहे हमारे मुल्क वाले. वो कह रहे हैं सुई गैस वाला हमारा फुटबॉल का इदारा देगी कि साली ईद थी कल रात को नाश्ता सही से नहीं किया कि गैस नहीं आ रही. These guys will give you footballers. वो अपना मेन काम नहीं कर रहे लेकिन फुटबॉल ठीक करेंगे. It's a bloody joke, यार. It's a bloody joke, honestly. Yeah. Anyways, I think, exactly. I think I agree. I think we all agree. Thank you so much, guys, for joining me on the show. It's been great chatting to you and discussing all of these things. And thank you for watching and listening. I think हमने जो broad सवाल थे हैं, जो आप चीज़ें सोच रहे हो पाकिस्तानी फुटबॉल है, पाकिस्तानी मेंस नेशनल टीम के बारे में, उनको हमने थोड़ा आंसर करने की कोशिश की है. ये जो मेन डिलेमाज हैं इनको हमने थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कुड डू. और आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है. And thank you so much once again. Do subscribe to the channel, follow us on social media, do share this video, this episode with everyone who likes Pakistani football, who likes football around you. And until next time, take it easy.